Good morning students and welcome to economics class. First I congratulate you for selecting commerce to make your career. I am Harish and I will teach you economics. As you know that in 11th standard you have three subjects as a commerce, accountancy, economics and business study. I teach you economics. In today's class first we discuss about the syllabus of the economics, its different parts, and then we continue our study. In 11th standard, your syllabus of economics is divided into two parts. Part A is the statistics for economics, and part B is the introductory microeconomics. You also have practical exam for the economics. We start our B part, introductory microeconomics. It's related mainly with the microeconomics. In today's class, we start our first chapter. It is economics and economy. I repeat, economics and economy. In this chapter, we study about what is the meaning of economics, what is economy, capitalist economy, socialist economy, mixed economy, what are their meaning, what are their differences. And as you know that CBSE also cut 30% syllabus in this year, so we less or deducted all these chapters in our study. Okay, we start our first chapter. It is economics and economy. First we see meaning of economics. जैसे आपने सब्जेक्ट लिया economics, तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि what is economics. Economics होता क्या है? आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़े 4 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के बारे में. बट माय क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स होता है क्या? अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, क्या है? इन सिंपल वे, इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस. As you know that you study economics with the social science in class 9 and 10. So economics is a part of social science in which we study how we can utilize our limited or scarce resources for the satisfaction of unlimited wants, and we also study how we can make maximum utilization of these resources. Suppose there is a government, how government can make maximum social welfare. If there is a person who is entrepreneur, how he can make maximum profit. If there is a consumer, how a consumer can get maximum satisfaction. So we study all these in today's class. First we start from meaning of economics. The word economics is made from two Greek words. These are oikos and mneme. जो हमारा वर्ड इकोनॉमिक्स है, ये ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बना है. These are oikos and mneme. Oikos means household and mneme means management. So in the earlier time, economics is related with the management of household. मतलब सिंपली बोल सकते हैं परिवार की जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज हैं हम उसका मैनेजमेंट कैसे करें, इसी की स्टडी किसमें की जाती थी? इकोनॉमिक्स में. पर जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हुई, तो इकोनॉमिक्स का जो क्राइटेरिया है, जो स्टडी है, वो भी इंक्रीज होती गई. नाउ इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी नॉट ओनली हाउसहोल्ड मैनेजमेंट but we also study management of the country or even different policies which are related with the world. तो ये जो मीनिंग है इकोनॉमिक्स का, मैनेजमेंट, हाउसहोल्ड मैनेजमेंट, ये आप बोल सकते हो अर्लियर टाइम का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके अंदर ये चेंज हो गया. अगर हम इकोनॉमिक्स की आज की बात करें, सो इन टुडे टाइम वी स्टडी इकोनॉमिक्स एज अ वेरी लार्ज स्केल. इकोनॉमिक्स इज ए साइंस. इकोनॉमिक्स को क्या माना गया है? साइंस. जस्ट लाइक यूर फिजिक्स, केमिस्ट्री इनको साइंस माना जाता है, सिमिलर वे में इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज ए साइंस. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट व्हिच रिलेट्स विद आवर ह्यूमन बिहेवियर. किससे रिलेट्स करता है? हमारे ह्यूमन बिहेवियर से. जैसे आप पढ़ेंगे डिमांड है, सप्लाई है, प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, रेवेन्यू है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर का पुट जरूर आएगा. Economics is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce means. It means it relates with the allocation of scarce means. दो वर्ड आ रहे हैं, scarce. Scarce means limited और means means resources. तो इकोनॉमिक्स का रिलेशन किससे है? स्केयर मींस मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज. और
और जैसे आपको मालूम है जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है वो रिसोर्स हमारे लिए क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और हम लिमिटेड रिसोर्स को कैसे काम में लेते हैं, तो फिल अप आवर मैक्सिमम वांट्स। हम क्या चाहते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से हमारे मैक्सिमम वांट्स को हम कैसे सेटिस्फाई करें। स्केल मींस इन सच ए मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। कब रिसोर्स को इस तरीके से काम में लें, अगर मैं कंज्यूमर है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कोई भी कंज्यूमर है, आप भी कंज्यूमर हो, मैं भी हूं। एक कंज्यूमर क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि हम जहां पर अपनी मनी स्पेंड कर रहे हैं उस मनी से हमारे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। सिंपली आप लोग बोल देते हो पैसा वसूल। अब पैसा वसूल मतलब कि जहां पर आपने मनी स्पेंड करी थी वहां पर आप फुली सेटिस्फाइड। मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा, when he can produce maximum at minimum cost, कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करें और कॉस्ट मिनिमम कम से कम आए। तो एक प्रोड्यूसर इसी चीज में लगा रहता है कि उसका रेवेन्यू कैसे बढ़े और उसकी कॉस्ट कैसे कम हो। ये भी किसके अंदर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में। द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, कि किस तरीके से सोसाइटी अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करे। जैसे गवर्नमेंट है, क्या बोल सकते हैं, सोसाइटी है, तो ये क्या चाहती है, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। सो इकोनॉमिक्स क्या हमारे लिए, इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस in which we study how we can utilize our limited resources for the satisfaction of unlimited wants. Suppose there is a consumer, he wants maximum satisfaction. There is a producer, he wants maximum profit. If there is a society or government, they want maximum social welfare. So in economics we study that how we can utilize our limited resources for the satisfaction of unlimited wants. This is the meaning of economics. Now we study two more words. These are scarcity and choice. Scarcity means in Hindi word for the scarcity is दुर्लभ। हम देखते हैं हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिए दुर्लभ है। इट मींस आसानी से अवेलेबल नहीं होते। they are available in limited quantity as compared to their demand. अगर उसके डिमांड से कंपैरिजन करें तो हमारे को लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। चाहे हम बात करें आयरन, हम बात करें कोल, हम बात करें पेट्रोलियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, और जितने भी इस तरह के नेचुरल रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, दे आर अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटी। और हर कंट्री क्या चाहती है कि अपने जो रिक्वायरमेंट्स है, वांट्स है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कैसे रिसोर्सेज का मैक्सिमाइज यूटिलाइज किया जाए। हर कंट्री चाहती है, इवन आप और मैं भी यही चाहते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, कि लिमिटेड रिसोर्सेज से हमारी मैक्सिमम वांट्स को हम कैसे सेटिस्फाई करें। So scarcity means resource available in the limited quantity as compared to their demand. Second is choice. In economics, in every field of economics, we face the problem of choice. Why we face the problem of choice? Because our wants are unlimited. हमारी wants क्या होती है, unlimited. Second, these wants are not set. Third, we can give priority to different wants. तीन बातें मैंने आपको बताया कि हमारी wants क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। हमारी wants कभी हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते, अनलिमिटेड होती है। अगर एक पर्सन की डेथ हो रही है तब उसको लगता है यार ये काम नहीं कर पाया, मेरे पास ये चीज नहीं ले पाया मेरी लाइफ में। सो आवर wants are unlimited. Second, these wants are not set. We are giving priority to the different wants. हमारी अलग अलग wants होती है। कुछ टाइम पहले तक आपकी प्रायोरिटी थी 10th क्लास की बुक्स, अब आपकी प्रायोरिटी है कॉमर्स की बुक्स, तो प्रायोरिटी चेंज होती रहती है। थर्ड, आवर वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। इट मींस अगर हम एक वांट्स को एक बार सेटिस्फाई करते हैं तो कुछ टाइम बाद वांट्स दोबारा आ जाती है। एंड टू फुलफिल दीस वांट्स वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं और इन रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज होता है, मतलब एक रिसोर्स एक से ज्यादा काम में आता है। So because of all these in economics we face the problem of choice. हम क्या फेस करते हैं, problem of choice, and this problem of choice is the basic problem of economics. Next we study branches of economics. There are two branches of economics. These are microeconomics and macroeconomics.
The word micro is developed from the Greek word micros, which means small. अगर माइक्रो की बात करें तो माइक्रो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है माइक्रोस, MICROS. It developed from the Greek word micros, which means small. What is the meaning of micro? Microeconomics is the branch of economics in which we study all economic problems which are related with the individual consumers or individual persons. Economics is the microeconomics is the branch of economics in which we study the different economic problems which are related with the individual economic units. हम क्या स्टडी करते हैं माइक्रो में? वो सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसका रिलेशन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट से है. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर, income of a consumer, production by a producer, price determination of a commodity or a service. So all these are the problems which are related with the microeconomics. Second is the macroeconomics. The word macro developed from the Greek word macros, MACROS, which means large. Macroeconomics is the branch of economics in which we study entire economy in the way of aggregate or average. हम मैक्रो में किसकी स्टडी करते हैं? एंटायर इकोनॉमी. और कैसे स्टडी करते हैं? आइदर इन द वे ऑफ एग्रीगेट और आइदर इन द वे ऑफ एवरेज. इफ आई से नेशनल इनकम, it is a subject matter of macroeconomics and its aggregate. If I say per capita income, it is also the subject matter of macroeconomics, but its average. So in micro we study about the individual economic units. In macroeconomics we study about the entire economic units. In micro, its main subject matter is price determination of a commodity or a service. हम माइक्रो में क्या स्टडी करते हैं? Price determination of a commodity or a service. How can we determine price of a commodity? हम किसी commodity या service की price कैसे decide करेंगे? We study it in microeconomics. The main tools of microeconomics are individual demand and individual supply. हम microeconomics के जो main tools हैं जिससे हम different microeconomic के problem solve out करते हैं, it is individual demand, individual supply. जबकि दोनों अलग-अलग चैप्टर हैं, हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे डिमांड और सप्लाई. And microeconomics is also known as price. Microeconomics is also known as price theory. हम microeconomics को क्या बोलते हैं? Price theory, because in micro we study price determination of a commodity or a service. While in macroeconomics we study determination of income and employment in the economy. How can we determine income and employment in the economy? We study it in macroeconomics. You study this in detail, but in 12th standard, not 11. And second, in macroeconomics, its main tools are aggregate demand and aggregate supply. ये भी आप 12th में पढ़ेंगे. Aggregate demand और aggregate supply जो आपके tools हैं, वो किससे relates हैं? Macroeconomics से. And macroeconomics is also known as income and employment theory. हम macroeconomics को क्या बोलते हैं? Income and employment theory. So I told you in brief about the microeconomics and macroeconomics. Now we study what are their difference. What is the difference between microeconomics and macroeconomics? हम जब भी किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर कोई डिफरेंसेस हम बताते हैं, तो डिफरेंस के लिए आपको हमेशा 3 कॉलम बनाने हैं. फर्स्ट में आप लिखेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस, देन देयर टू कंटेंट. यहां पर क्या कंटेंट है आपका? माइक्रो मैक्रोइकोनॉमिक. फर्स्ट डिफरेंस इज मीनिंग. पहले डिफरेंस आप किसका बनाएंगे? मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. दूसरा सब्जेक्ट मैटर. इन माइक्रोइकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. In macroeconomics we study about the entire economy. Next is central problems or key problems. In microeconomics we study about the individual economic units, but in macroeconomics we study about the entire economic units. Key tools of microeconomics are individual demand and individual supply, and key tools of macroeconomics are aggregate demand and aggregate supply. Scope. The scope of microeconomics is limited, but the scope of macroeconomics is very large. And last we can say that example of microeconomics and example of
macroeconomics. The activities which are related to the individual economic units are the example of micro, just like price determination of a commodity, demand by individual consumer, income of individual consumer, etc. While national income, per capita income, national output, balance of payment, government budget, all these are the subject matter of macro. अगर सिंपली आपसे बात करूं जो 11th की माइक्रो की बुक के आपका चैप्टर्स हैं, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. और जो आपकी 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक आएगी उसके जितने भी चैप्टर्स हैं, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. So I repeat again, in today's class what we study, what is economics and economy. In this we study what is the meaning of economics, how the word economics developed from the Oikos naming, what are the meaning of the word scarcity and choice. We also study what are microeconomics, what are macroeconomics, what are their meaning, what are their different features and their differences. In the next class we study about the positive and normal